हेलो फ्रेंड्स, जय माताजी। केम छो बधा? आ बधी वस्तु जोई अने तमे समझी गया हशो। आज हूँ शुं बनावानी छूं? आज हूँ खीर बनावानी छूं। तो आ छे चोखा जे मैं धोईने राख्या छे। घी छे, आ दूध छे, आ बदाम अने एलची छे, खांड अने पाणी। सौ पहला आपणे ચોખાને બાફવા રાખી દઈએ। મારા પાસે ટાઈમ નથી એટલે આજે હું કુકરમાં જ બાફું છું, નકર હું તપેલીમાં બનાવી તો બહુ જ સરસ બફાય, તો બહુ મસ્ત બને છે। આપણા ચોખા છે બાફવા મૂક્યા હતા તે સરસ બફાઈ ગયા છે। હવે આપણે આ દૂધ છે એમાં ચોખાને એડ કરી દઈશું। આ દૂધ છે તે 1 લીટર છે। 1 લીટરમાં 1 કપ ઓછું છે દૂધ। દૂધને આપણે સારી રીતે હલાવીશું। હવે આપણે આ ખાંડ છે, ખાંડ 2 ચમચા જેટલી છે। दूध उकड़े त्या आपणे बदाम अने एलची ने पीसी नाखी। आपणी खीर छे ते उकड़ी गई छे। आ 1 लीटर दूध हतुं एमां 1 कप ज खाली ओछुं हतुं, ए पण चानो साव नानो आटलो आवे ने ते। तो मैं 15 मिनिट उकाळी छे। तमारे जे प्रमाणे दूध होय ते प्रमाणे उकाळवानी। आ एलची पाउडर छे, आ बदाम छे। मैं भूको करी नाख्यो छे खांडीम खांडीने साव, केम के अमारे दादा छे ते खाई न शके एना माटे थईने तमे स्लाइड पण करी शको छो। હવે ઘડીક એને પણ ઉકળવા દઈશ એટલે થોડું કદાચ મોઢામાં આવે તો પણ દાદા ચાવી શકે। આ છે દેશી ઘી, બહુ નથી નાખવાનું, બસ આટલું જ નાખવાનું છે। કરી એટલે બધું खीर बनी गई है। हवे एमां आपणे केसर नाखशुं। तमने पहला बतावता भूली गई थी। गैस बंद करीने केसर नाखवानुं छे। तो आपणी आ खीर बनीने रेडी थई गई छे। केवी लागी तमने आपणी खीर? मने कॉमेंट करजो, लाइक करजो, शेर करजो मारा विडियो ने। जय माताजी।